Good morning, everyone. Am I audible to everybody? Please let me know whether I am audible or not. Good morning, everyone. Am I audible to everybody? Please let me know whether I am audible or not. जल्दी से बोलो कि मैं ऑडिबल हूँ कि नहीं हूँ. गुड मॉर्निंग. ओके. गुड मॉर्निंग सौरभ. Okay. So let's start today's sessions. In the previous session, we have discussed about the feedback. We have discussed about the feedback amplifiers and what are the effects of feedback amplifiers. We have already discussed. In today's lecture, what we are going to do, we are going to learn the feedback topologies. Topologies means how many type of connections or feedback connections can be possible for a feedback amplifier. So as we know that in a feedback system there will be a source. So there will be a source. So it is a source, you can see. So there are different blocks. So this is the source. Okay. So this is the source. And there will be a basic amplifier as we have discussed earlier. So this is the basic amplifier, and before the basic amplifier there will be a mixture. We have already seen that mixture, and after that what happens, the output signal. So if we look at the previous lectures, you can see that here this is the basic amplifier and this one is the mixture. Okay, and here the output voltage is sampled. Here the output voltage is sampled. Here you can see the output voltage is sampled and feedback to the input also. So ये जो सैंपल होगा, ये सैंपल कैसे होंगे? The sample will be done by a device called sampler. So एक सैम्पलर होंगे, एक बेसिक एम्पलीफायर होंगे, एक आपका मिक्सचर होगा और नीचे आपका फीडबैक लाइन होंगे. So that's why I am writing here कि this is the basic amplifier
और बेसिक एम्पलीफायर के बाद आपके होंगे सैम्पलर। The sampler will take the output signal in the feedback path and it will mix with the source signal. And last में आपका क्या होगा, कुछ load connected होंगे, there will be some load connection. Okay, so there will be some load connection. So this is the load. So this is the total block diagram you can see of a feedback amplifier. Now in this feedback amplifier, if I look, अगर मैं यहाँ से इस तरफ देखता हूँ तो जो रेजिस्टेंस मुझे नजर आएंगे, सो लेट अस टेक इट एज RI. RI इज द इनपुट इम्पीडेंस ऑफ दिस बेसिक एम्पलीफायर. सो इनपुट इम्पीडेंस ऑफ द बेसिक एम्पलीफायर, यहाँ से मैं देख रहा हूँ तो बेसिक एम्पलीफायर का इनपुट इम्पीडेंस मुझे नजर आएगा. ओके, सिमिलरली अगर मैं ये वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट से अगर इस तरफ देखता हूँ, इफ आई लुक एट दिस direction, in this direction, then I will get another input impedance, but this is the input impedance of the total feedback amplifier. This is the input impedance of the basic amplifier and this is the input impedance of the total feedback amplifier. Similarly, if we see the resistance in this direction from this point, so I will get R0 and R0 is the output impedance of the basic amplifier only. Similarly, if we see the output impedance from this point, we will get the output impedance of the total feedback. Total feedback circuit का मुझे output impedance मिल जाएंगे. So this is how the input impedance are there and this is how the output impedances are there, where RI is the input impedance, RI is the input impedance of the basic amplifier, R0 is the output impedance of the basic amplifier, R0F is the output impedance of the total feedback amplifier and RIF is the input impedance of the total feedback amplifier. Now ये जो mixture है, so what is this mixture doing? First point, so mixture is doing, mixture क्या कर रहा है? Mixture is only mixing the signals. कौन से signals? The mixing the feedback signals and the source signals. So mixture, what is doing the mixture? Mixture क्या कर रहा है? यहाँ से जो feedback signal आएंगे, ये दोनों feedback signal को, यहाँ पे feedback signal, यहाँ पे source signal, ये दोनों signal को mix करके आपका basic amplifier के अंदर जाएगा. So what we can say that mixture performs the mixing of feedback signal, जो feedback line से आएंगे, and the source signal, ये दोनों signal को mix करेगा. So that's why it is called as a mixture. Next, mixture describe the input impedance of the feedback amplifier, because ये जो total feedback amplifier होंगे आपके पास, ये जो total feedback amplifier है, ये total feedback amplifier का input impedance कहाँ से defined होंगे? mixture के input impedance से. So that means we can say that mixture describes the input impedance, of the total feedback amplifier, of the total or overall in feedback amplifier, overall feedback amplifier. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं. अब सैम्पलर के बारे में बात करते हैं. सैम्पलर, ये जो सैम्पलर है, व्हाट इज डूइंग? सैम्पलर का काम क्या है? सैम्पलर क्या कर रहे हैं कि आपका जो आउटपुट सिग्नल ऑफ द बेसिक एम्पलीफायर हो रहा है, ये आउटपुट सिग्नल ऑफ द बेसिक एम्पलीफायर को
के एक पार्ट को सैंपल करके फीडबैक लाइन पे लेकर आएंगे। आउटपुट सिग्नल के एक पार्ट को सैंपल करके वो फीडबैक लाइन पे लेकर आएगा और मिक्सर के साथ मिक्स होगा। सो सैम्पलर का काम होगा आपका, सैम्पलर performs the sampling of the output signal आउटपुट सिग्नल के जो सैम्पलिंग होगा, सैम्पलिंग मतलब उसके जो एक पार्ट निकल के आएगा, वो पार्ट आपको कहाँ से निकल के आएंगे, सैम्पलर आपको करके देगा। तो और एक चीज़ यहाँ पे देख रहा हूँ कि सैम्पलर का जो आउटपुट इम्पीडेंस है, सैम्पलर का जो आउटपुट इम्पीडेंस होगा, दैट आउटपुट इम्पीडेंस आपका टोटल फीडबैक एम्पलीफायर का होंगे। सो दैट मीन्स वी कैन से दैट सैम्पलर describes the output impedance of the overall feedback amplifier. These are the 4 points, very easy points. Now अब देखिए, ये जो मिक्सचर है कैसे मिक्स होंगे। हमने क्या देखा कि मिक्सचर आपका सोर्स सिग्नल और आपके पास जो फीडबैक सिग्नल यहाँ से आएगा, यहाँ से जो फीडबैक सिग्नल आएंगे वो फीडबैक सिग्नल को मिक्स करेंगे। सैम्पलर क्या कर रहा है, आपका यहाँ से जो आउटपुट सिग्नल हो रहा है उस आउटपुट सिग्नल का एक पार्ट सैंपल करके फीडबैक लाइन पे दे रहा है। ये आपका दोनों इम्पॉर्टेंट काम है। अब फीडबैक टोपोलॉजीज का मतलब क्या होता है? फीडबैक टोपोलॉजीज का मतलब होता है कि आपका यहाँ मिक्सर के अंदर कैसे मिक्स होगा और सैम्पलर के अंदर कैसे सैंपल होंगे। मतलब द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग एंड द प्रोसेस ऑफ सैम्पलिंग इन द सैम्पलर एंड द मिक्सर दैट डिफाइंस डिफरेंट कनेक्शंस। मिक्सर आपका बहुत तरीके से हो सकता है, मिक्सर सीरीज मिक्सिंग हो सकता है, शंट मिक्सिंग हो सकता है। विल सी दैट। सो लेट अस सी फर्स्ट द टाइप्स ऑफ मिक्सिंग। मिक्सिंग कैसे हो सकता है? ये जो ए है, ये ए आपका बेसिक एम्पलीफायर है। सो दिस ए इज द बेसिक एम्पलीफायर एज वी हैव लर्न प्रीवियसली कि ए आपका बेसिक एम्पलीफायर है। एंड दिस बीटा, ये आपका फीडबैक पाथ है, फीडबैक पाथ का गेन है। ओके, नाउ आपके पास एक सोर्स होंगे। सो लेट अस से दिस इज द सोर्स। सो दिस इज द सोर्स Vs, ये आपका सोर्स है। ओके, सो Vs से आपका सिग्नल और बीटा से आपका एक सिग्नल आएंगे, वो दोनों सिग्नल आके मिक्स होगा। अब मिक्सिंग ऐसे हो सकता है, लेट अस से द मिक्सिंग इज हैविंग लाइक दिस पैटर्न। यहाँ से आपका मिक्सिंग ऐसे हो रहा है। जस्ट कनेक्शन आपको समझना है। सपोज द मिक्सिंग इज हैपनिंग लाइक दिस। इन दिस केस व्हाट हैपन्स, आपका यहाँ पे Vs है। ओके, दिस इज द सोर्स पार्ट और सोर्स पार्ट से आपका एक करंट जा रहा है। सो लेट अस से द करंट इज फ्लोइंग एज इनपुट करंट II। और ये जो बीच में है, ये जो बीच का पोर्शन है जहाँ पे आपका ये मिक्सिंग हो रहा है, यही आपका मिक्सचर है। ये कनेक्शन आपका मिक्सचर है। ये जो येलो कलर में मैंने डाला है, ये आपका मिक्सचर है। ओके, तो मिक्सचर के यहाँ पे वोल्टेज कितने होंगे? यहाँ पे वोल्टेज आपका Vf वोल्टेज होगा। यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा? यहाँ पे वोल्टेज आपका Vi वोल्टेज होंगे, जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था। और ये जो II करंट यहाँ से जा रहा है, दिस II करंट ये फ्लो होके बेसिक एम्पलीफायर के अंदर जाएंगे। सो दैट मीन्स यहाँ से जो करंट फ्लो होगा, दैट
is II. ओके, नाउ आप सोचिए कि अगर मैं ये वाले पॉइंट से इनपुट इम्पीडेंस देखता हूँ, सो इसको मैंने नाम दिया था RIF. दिस विल बी द इनपुट इम्पीडेंस ऑफ द ओवरऑल फीडबैक एम्पलीफायर. सिमिलरली मैं अगर ये वाले पॉइंट से इनपुट इम्पीडेंस देखता हूँ तो इसका नाम था आपका RI. अब ये जो RIF है इनपुट इम्पीडेंस, मतलब उस पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे आपका वोल्टेज और करंट का रेशियो. सो ये वाले पॉइंट पे वोल्टेज और करंट का रेशियो मतलब VS डिवाइडेड बाय II. सिमिलरली RI जो है, RI क्या होंगे, द वोल्टेज एंड द करंट रेशियो एट दिस पॉइंट. सो वोल्टेज क्या है, VI डिवाइडेड बाय II. सो दैट मीन्स VI divided by II. So this is the input impedance of the basic amplifier, and this one is the input impedance of the total feedback amplifier. Now the connection has been done in this pattern. ये आपका VF था. Okay, now in this VF you can see that बेसिक एम्पलीफायर के अंदर, ध्यान से देखना, बेसिक एम्पलीफायर के अंदर जो इनपुट करंट है और सोर्स से जो करंट निकल रहा है ये दोनों सेम है. सो फर्स्ट पॉइंट में क्या लिख सकता हूँ, पहला वाला पॉइंट कि द इनपुट करंट I input और it will be equals to the input current of the basic amplifier. So input current of the basic amplifier, ये दोनों सेम है. बेसिक एम्पलीफायर का इनपुट करंट और सोर्स का जो इनपुट करंट ये दोनों सेम है. नेक्स्ट पॉइंट पे मैं लिख सकता हूँ कि इफ वी अप्लाई KVL हियर, इफ वी अप्लाई KVL हियर, देन यू कैन सी कहाँ पे KVL अप्लाई करना है. यू हैव टू अप्लाई KVL एट दिस पॉइंट. ये वाले नोट पे आप KVL अप्लाई कर दीजिए. सो इफ यू अप्लाई KVL हियर, सो व्हाट विल बी द इक्वेशन. सो KVL इक्वेशन एट दिस पॉइंट विल बी प्लस VF माइनस VS प्लस VI equals to 0. So from this we can find the value of VI, which is the input voltage to the basic amplifier. So VI is equals to VS minus VF. That means the source voltage minus the feedback voltage will be given by the input voltage of the basic amplifier. Okay, so that means input voltage of the basic amplifier क्या होंगे, आपका सोर्स वोल्टेज माइनस फीडबैक वोल्टेज. माइनस हो रहा है क्यों, क्योंकि मैं नेगेटिव फीडबैक ले रहा हूँ. एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव फीडबैक. एंड दिस टाइप ऑफ कनेक्शन इन द मिक्सचर वेयर द सोर्स and the feedback lines are connected in this pattern. So that's why it is called series mixing, because यहाँ से जो आपका सोर्स करंट आ रहा है, दैट सोर्स करंट आपका सेम करंट आपका फीडबैक लूप बेसिक एम्पलीफायर के अंदर जा रहा है. सो वी कैन से दैट दे आर कनेक्टेड इन सीरीज. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड सीरीज मिक्सिंग. So this type of connection is called series mixing. Why it is series mixing? Because the source current and the input current to the basic amplifier both are same. If both are same, that means they are connected in series. Series में क्या होता है, current same होता है. So that's why the current is same. So name is series mixing. Similar connection और एक टाइप का कनेक्शन में जा रहा हूँ. और एक टाइप के कनेक्शन क्या होंगे, सपोज आपके पास सोर्स है, सपोज दिस इज द सोर्स. ओके, सो दिस इज प्लस माइनस सोर्स. अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ,
सपोज आई हैव अ सोर्स राइट नाउ एंड यहाँ पे मेरा फीडबैक पोटेंशियल है. नाउ व्हाट विल डू, we will connect the feedback line like this. So this is the main line of the basic amplifier, and here we will connect this feedback line like in this pattern. We will connect like this. If it is connected like this, so यहाँ पे कनेक्शन होगा, यहाँ पे कनेक्शन होंगे. ओके, अब देखिए सपोज यहाँ से आपका एक सोर्स करंट आ रहा है. इफ द कनेक्शन इज लाइक दिस, सो सपोज देयर इज अ सोर्स करंट IS. सो व्हेन दिस सोर्स करंट विल कम, so this IS current will not go inside the feedback inside the basic amplifier, because some part will be going into the feedback path. So that's why in this case the source current and the input current to the basic amplifier will not be same. ये दोनों same नहीं होंगे. Some part of the current is going as IF. So what we can say here, we can say that the source current, that is the IS, will be equals to the feedback current plus the input current. But in this case, what was happening? The source current was flowing inside, the same current was flowing through the basic amplifier. But यहाँ पे नहीं, current division हो रहा है. Current division कहाँ पे होता है? Current division happens in the case of shunt. So that's why this type of mixing, this type of mixture connection is known as the shunt mixing, because the currents are divided. So now we can assume that यहाँ पे आपका IS करंट आ रहा है. ओके, और IS करंट मतलब यहाँ से आपका एक करंट सोर्स है, IS करंट सोर्स. So this is the IS current source, and that is divided into two parts. One is IF, another one is II. Similarly, in this case, if we want to see the input impedances, so first input impedance from the front of the mixture, that is RIF. So RIF क्या होंगे? The VS, यहाँ पे पोटेंशियल, द पोटेंशियल क्या होंगे? अब देखिए यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो एट दिस पॉइंट व्हाट विल बी द पोटेंशियल? दैट पोटेंशियल विल बी सेम एट दिस पोटेंशियल. सो इफ द पोटेंशियल एट द इनपुट ऑफ द बेसिक एम्पलीफायर इज VI, so that potential will come here, same potential. So यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल तो सेम होंगे. सो वी विल राइट इट VI. So VI divided by IS, that is the RIF, that is the input impedance of the total feedback amplifier. Similarly, if we want to find the input impedance of the basic amplifier, that is here. So what will be the value? The voltage value here is VI and the current value is II. So VI by II is the input impedance of the basic amplifiers, and RIF is the input impedance of the total amplifier. Okay. So in this case, what is happening? You can see, first point you can see that the mixer VI, what is the, यहाँ पे क्या था, आपका जो करंट था ये दोनों सेम था बिकॉज सीरीज कनेक्शन था, बट यहाँ पे आपका शंट कनेक्शन है. सो बेसिक एम्पलीफायर का जो इनपुट वोल्टेज है, दैट इनपुट वोल्टेज इज सेम एज दिस वोल्टेज. ओके, सो वी कैन से दैट input voltage of the mixture
मिक्सचर के जो इनपुट वोल्टेज है दैट इज इक्वल्स टू द इनपुट वोल्टेज ऑफ बेसिक एम्पलीफायर. सो बेसिक एम्पलीफायर का इनपुट वोल्टेज और मिक्सचर का इनपुट वोल्टेज ये दोनों सेम होंगे. अनदर पॉइंट, यहाँ पे क्या हो रहा है, द करंट हैज़ बीन शंटेड. सो IS करंट आ रहा था, सोर्स से आपका IS करंट आ रहा था, एक पार्ट आपका IF इधर जा रहा था और दूसरा पार्ट इधर जा रहा था. सो करंट इज डिवाइडिंग, सो दैट्स वाई द नेम इज शंट मिक्सिंग. शंट मिक्सिंग. ओके, यहाँ पे करंट सेम था इसीलिए सीरीज मिक्सिंग था. यहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है, सो आपका शंट मिक्सिंग. नाउ विल गो फॉर, ये अब दो टाइप का मिक्सर कनेक्शन हो सकता है, एक सीरीज में एक शंट में. नाउ इफ वी गो फॉर द, ये जो सीरीज मिक्सिंग है, तो सीरीज मिक्सिंग में व्हाट वी आर सीइंग दैट द इनपुट करंट आर सेम, but the VI will be equals to VS minus VF. So that's why the series mixing is sometimes called as voltage mixing, because current is same, voltage is mixing. So that's why the series mixing is sometimes called as the voltage mixing. So series mixing and voltage mixing are same thing. So कभी कभी आपको वोल्टेज मिक्सिंग भी बोला जाएगा, वोल्टेज मिक्सिंग. एंड हियर यू कैन सी द करंट आर मिक्सिंग बिकॉज द IS करंट दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, IF एंड II. सो दैट्स वाई शंट मिक्सिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज करंट मिक्सिंग. करंट मिक्सिंग. नाउ विल गो फॉर the types of sampling. So let us go for types of sampling. Is it okay? सौरभ, any doubt? यहाँ तक कोई डाउट है सौरभ को? Is it clear? Any doubt, Saurabh? Please let me know. Is it clear? So let us see. Saurabh, any clear है ये? Then I go for the shunt mixing, the shunt types of sampling. So let us go for the types of sampling. So types of sampling में आपका क्या होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग. क्या कर रहा था सैम्पलर जस्ट इट इज डिवाइडिंग, नॉट डिवाइडिंग, इट इज टेकिंग द सम पार्ट ऑफ द आउटपुट वोल्टेज. सो आउटपुट वोल्टेज का कुछ पार्ट को हम लोग फीडबैक पाथ पे लेकर आएंगे यूजिंग सैम्पलिंग. सो नाउ हाउ मेनी वेज वी कैन टेक दैट पार्ट, दैट इज द टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग. सो यू कैन सी हियर, this is the basic amplifier. So this is the basic amplifier and this one is the feedback path. So this is the feedback path. Okay, now if this is the feedback path, then we can connect the feedback path in this pattern. Let us say we have connected a load resistance here. We have connected a load resistance here. So this is RL and
we have connected the feedback like this. यहाँ पे आपका फीडबैक कनेक्शन है like this, और this is connected here like this. Okay, if this is this type of connection, then what happens? Now let us see what will be the output voltage of this basic amplifier. So output voltage of the basic amplifier, let us assume that it is V0. If it is V0, then the voltage across the load resistance will also be V0, because according to the circuit. And let us say the current that is flowing through the load resistance is I0. Now if we want to find the output impedance from this point, so what will be the output impedance from this point? That is R0. And what will be the output impedance at this point? That is R0F. Okay, so this one is the sampler. ये आपका सैम्पलर है. सैम्पलर के जस्ट पहले आप अगर आउटपुट इम्पीडेंस निकालते हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज द आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ द बेसिक एम्पलीफायर. एंड सैम्पलर के जस्ट बाद इफ वी फाइंड द आउटपुट इम्पीडेंस, दैट विल बी कॉल्ड एज द आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ द feedback amplifier. Okay, so now you can see that if the voltage at this point is V0, the voltage between these two lines is V0. That means the voltage between these two lines is also V0. That means the voltage at here is also V0. Okay, so what we are selecting at the feedback line, we are selecting the voltage here. So the voltage between the two lines has been selected and connected to the feedback path. That's why it is called the voltage sampling. तो इसीलिए इसका नाम है voltage sampling. And voltage sampling is done by shunt connection. You can see there is a shunt connection. So that's why it is also called as the shunt sampling. Shunt sampling. Similarly, if we go for, यहाँ पे क्या हो रहा है कि voltage selection of the voltage. What is happening here? Selection of the voltage मतलब selection of the voltage. Selection of the voltage means the output voltage of the basic amplifier has been selected and taken to the input to the basic amplifier, input to the feedback path. Okay, that's why it is called the selection of the voltage. Similarly, let's go for the next type of shunt. That is, let us say same thing we are doing. Suppose this is the basic amplifier. Okay, so the input voltage to the basic amplifier यहाँ पे है, और this is the, sorry, this one is the feedback. Now what will happen? We will connect the basic amplifier in this pattern like this in a series connection, and let us see what happens. So if we connect this in the series connection,
So this will be the series connection. So this is the series connection, and here we have to connect a load resistance. So this is the load resistance. Now let us say what will be the, we are assuming some values. First value, the output current of the basic amplifier is I0, suppose. So this I0 will flow, here and RL के through जाएंगे. So that means the current through the RL will be I0. When the current will flow through the RL, so a voltage across it will be produced. So this is V0. Okay. और मिक्स आपका सैम्पलर कहाँ पे है? So this is the sampler. You can see. ये आपका सैम्पलर है. So this one is the sampler. Okay. If this is the sampler, then यहाँ पे if we find the output impedance at this point, so it will be ROF. What will be the output impedance at this point? This will be the output impedance of the basic amplifier R0. Okay. So now ये जो I0 करंट है, ध्यान से देखना, ये जो I0 करंट है, ये this current will flow through the RL, comes here and moves into the feedback path. So that means the input current यहाँ से आएंगे I0 and this I0 current will flow in this pattern. So what we are sampling right now, we are sampling the current information. In this case, in the first case, what you have sampled? We have sampled the voltage between the two lines. That's why voltage sampling. Right now, this current is moving into the feedback path. That means we are sampling the current information. That's why this type of sampling is called the current sampling. So this is called current sampling. Sometimes this current sampling is also called as series sampling. दोनों same चीज है. Both of them are same. So series sampling. So in this case, what we can see, that I0 remaining the same. The I0 will be same for both the feedback amplifier, path and the basic amplifier. But in this case, in the voltage sampling, what you are getting? You are getting the V0 as same. So that's why we can write here, यहाँ पे जैसे आपका सिलेक्शन ऑफ वोल्टेज था, यहाँ पे होंगे आपका सिलेक्शन ऑफ करंट. So we are selecting the current information to go into the feedback path. That's why the selection of current. Okay. Now, so what we have seen? We have seen that there are two types of mixing. First one is the series mixing or voltage mixing. So the first one was the series mixing and the voltage mixing. दोनों same चीज. And here we have got second type of mixing, that is the shunt mixing or current mixing. Similarly, in the case of sampling, we have got two types of sampling. The first one is the voltage sampling or the shunt sampling, and the second one is the current sampling or the series sampling. So two types of sampling, two types of mixing. So for this, if we want to classify the feedback topologies, so feedback topologies पे जाते हैं.
अब देखिए देयर कैन बी फोर टाइप्स ऑफ, इफ वी डू द कॉम्बिनेशन बिटवीन द टू टाइप ऑफ मिक्सिंग एंड टू टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, विल गेट टोटल फोर पॉसिबिलिटीज. सो फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या होंगे? फर्स्ट पॉसिबिलिटी विल बी, सपोज मैं ऐसे लिख रहा हूं, इफ यहां पे आपका मिक्सर था, सो दिस वाज द मिक्सर एंड यहां पे आपका सैम्पलर थे, सो दिस वाज द सैम्पलर. तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है? फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज दैट कि इफ माय मिक्सर इज अ वोल्टेज मिक्सिंग. वोल्टेज मिक्सिंग क्या था? वोल्टेज मिक्सिंग मतलब आपका ये वाला सीरीज मिक्सिंग पे आपका वोल्टेज मिक्सिंग हो रहा था, सीरीज मिक्सिंग पे आपका वोल्टेज मिक्सिंग हो रहा था. सो इफ द मिक्सर इज कनेक्टेड एज वोल्टेज मिक्सिंग, voltage mixing, and if the sampler is connected in series connection मतलब current sampling. so suppose यहाँ पे आपका current sampling है, जिसका मतलब आपका सीरीज सैम्पलिंग था. और वोल्टेज मिक्सिंग का मतलब क्या था? वोल्टेज मिक्सिंग का मतलब था आपका वोल्टेज वाज, यू कैन सी, वोल्टेज मिक्सिंग वाज नथिंग बट द सीरीज मिक्सिंग. सो सीरीज मिक्सिंग. ओके, नेक्स्ट क्या हो सकता है? सपोज आपका मिक्सर वोल्टेज मिक्सिंग पे है और सीरीज कनेक्शन पे है, एंड आपका जो सैम्पलर है वो सपोज आपका वोल्टेज सैम्पलिंग कर रहा है, दैट मीन्स वो शंट कनेक्शन पे है. ये हो सकता है. थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है? द मिक्सर इज इन द करंट मिक्सिंग पोजीशन, और यू कैन से दैट करंट मिक्सिंग मतलब आपका शंट मिक्सिंग, and the sampler is in the also in the current sampling mode, that means the series mode. Similarly, let us say the mixer is in the current mixing position, or we can say that shunt mixing position, and the sampler is in the voltage, or you can say the shunt sampling position. So we have four possibilities. So if this combination happens, then one type of feedback topology. If this combination happens, then one type of feedback topology. If this combination happens, so third one. So if this combination happens, so again fourth one. So for the first case, this is one feedback topology. So we will call it as voltage series topology. So voltage series topology. So we are naming at voltage series topology. Okay, so voltage series topology. Voltage series topology. Okay, next, the second one is called as the voltage shunt topology. So we'll call it as voltage shunt topology. The third one क्या होंगे? Current series topology. Okay, so in this way there are four types of feedback connections or feedback topology. So I am writing the name, that is voltage shunt topology. The third one is the current series topology,
and the fourth one is the current shunt topology. ओके, सो ये आपका चार टोपोलॉजीज है. नाउ वी हैव टू एनालाइज ईच ऑफ द सिंगल टोपोलॉजी. सो फर्स्ट वी विल गो फॉर वोल्टेज सीरीज टोपोलॉजी. सो लेट अस गो फॉर द वोल्टेज सीरीज टोपोलॉजी. सो वोल्टेज सीरीज टोपोलॉजी में द कनेक्शन कैसे होंगे. सो कनेक्शन के बाद में जाएंगे, फिर पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे देखेंगे. सो पहला पॉइंट होगा, फर्स्ट पॉइंट, वोल्टेज सीरीज टोपोलॉजी. सो दैट मीन्स यहाँ पे आपका होगा वोल्टेज सैम्पलिंग. ओके, सो यू कैन सी हियर कि मैंने यहाँ पे कुछ गलत किया है. जस्ट ये वाला चीज़ आपका थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, इसको मुझे थोड़ा इरेज करना होगा. I have just done one simple mistake. I have done a simple mistake here. So let us see that first. यहाँ पे ये जो टोपोलॉजीज है, ये टोपोलॉजीज का नाम कैसे डिनोट होगा वो आपको पहले समझना है. मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक किया था कि वोल्टेज मिक्सिंग और यहाँ पे सीरीज है. सो देखिए, अगर आपका सीरीज पे मिक्सिंग हो रहा है, सीरीज पे मिक्सिंग हो रहा है और आपका यहाँ पे करंट सैम्पलर है, सो इसीलिए इसका नाम होता है आपका, देखिए वोल्टेज. यहाँ पे क्या है, आपके पास चार ऑप्शंस होंगे. एक होगा ये चार ऑप्शंस, पहला वाला ऑप्शन ये वाला, दूसरा वाला ऑप्शन ये वाला, थर्ड ऑप्शन दिस वन, फोर्थ वन दिस वन. सो आई विल डिस्कस द नेम्स इन द एनालिसिस सेक्शन. अभी मैं नेम एनालिसिस नहीं करूँगा. हम लोग जस्ट पहले आपको बोला कि मिक्सर में अगर आपके पास वोल्टेज मिक्सिंग है और करंट सैम्पलर अगर करंट मोड पे होता है, देन नाम क्या होंगे वो हम लोग एनालिसिस पे देखेंगे. सो लेट अस गो फॉर फर्स्ट वोल्टेज सीरीज टोपोलॉजी. अब देखिए, ये वोल्टेज सीरीज टोपोलॉजी क्या होता है. वोल्टेज सीरीज टोपोलॉजी का मतलब होता है कि अगर ये जो पहला वाला टर्म है, ध्यान देना है यहाँ पे ध्यान से आपको देखना है. थोड़ा सा ट्रिकी है कि ये जो वोल्टेज वाला नाम है, दिस वोल्टेज पार्ट, ये जो वोल्टेज, दिस डिनोट्स द सैम्पलिंग, दिस डिनोट्स द सैम्पलिंग. ये आपका पहले लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये मिक्सर है. क्लियर, ये आपका मिक्सर नहीं है, ये आपका सैम्पलिंग के लिए नाम है वोल्टेज. और दिस थिंग इज फॉर द मिक्सिंग, ये आपका मिक्सिंग है. ओके, सो दैट मीन्स इन दिस केस व्हाट वी विल गेट सीरीज मिक्सिंग and voltage sampling. That's why the name is voltage series topology. Now let's come here कि series mixing कहाँ पे हो रहा है. Series mixing and voltage sampling. So this one will be called as voltage series topology. Series कहाँ से आया? Series is for the mixing part and voltage is for the shunt part. Okay, similarly all these will be named. So first point ये वाला, this is a very important point कि voltage denotes the sampling, series denote the mixing. So now कभी कभी इसको और एक नाम बोला जाता है, that is voltage sampling वाले केस में, voltage sampling वाले केस में आपका क्या था, वोल्टेज सैम्पलिंग. और सीरीज मिक्सिंग में आपका वोल्टेज ही मिक्स होता है, इसीलिए नाम होता है वोल्टेज टोपोलॉजी. तो इसीलिए इसका नाम होता है वोल्टेज टोपोलॉजी, वोल्टेज टोपोलॉजी. सिमिलर अगर वोल्टेज टोपोलॉजी लिखा होता है, सो दिस वोल्टेज is for the sampling
and this voltage is for the mixing. M for mixing, S for sampling. Okay, next point पे जाते हैं. So next point पे, since we are doing the series mixing and shunt sampling. Voltage sampling मतलब shunt sampling. Voltage sampling मतलब shunt sampling. So that's why it is also called as series So what we are doing? Series mixing plus shunt sampling. That's why आपका ये नाम कभी कभी लिखा जाता है कि सीरीज शंट. यहाँ पे आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा कि अगर आपके पास नाम गिवन है वोल्टेज सीरीज मतलब एक कनेक्शन है, एक वोल्टेज है, करंट और वोल्टेज, देन ऑलवेज द फर्स्ट टर्म goes for the sampling and the second term goes for the mixer. अगर आपके पास वोल्टेज ऐसा, वोल्टेज करंट वोल्टेज ऐसा कुछ लिखा होता है टोपोलॉजी में, सो दिस इज फॉर द सैम्पलिंग पार्ट एंड दिस इज फॉर द मिक्सिंग पार्ट. बट आपके पास अगर सीरीज शंट सीरीज ऐसा कुछ लिखा रहता है, देन ऑलवेज the first part denotes the mixer part and the second part denotes the sampler part. ये चीज आपको याद रखना है. ओके, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे इफ वी कनेक्शन टोपोलॉजीज अभी कनेक्ट करते हैं. सो सपोज आपके पास एक बेसिक एम्पलीफायर है. सो लेट अस टेक अ बेसिक एम्पलीफायर. So suppose this is an basic amplifier. So let us take a basic amplifier. So this one is the basic amplifier. And here we are taking the feedback path gain, that is beta. So this one is the basic amplifier and this is the feedback path gain. So now here we will have the output line of the basic amplifier and here the input line to the feedback path. So this is the input to the basic amplifier and this is the output of the feedback path. Okay, so now for this case we are doing the series mixing. So let us connect with series mixing. So if we connect this with series mixing, so what will be the connection? So the Vs will be in the series with this mixing part. So that means if we have Vs here, let us say we are having Vs here. We are having Vs here. So this is the Vs plus minus Vs, and this Vs will be connected in series with this one. So with this feedback, so that means the connection will be like this, like this series connection. We have already learned this. So if we do the series connection, this one and here this one. So this is the series connection, you can see series mixing. Okay, so now what is the input current here? So the input current here is the source current Is, and this source current Is will flow inside the basic amplifier. Current will be same. Okay, so the voltage across this is Vs and the voltage across the basic amplifier
is Vi and the voltage across the feedback output is Vf. So this will be plus minus Vf. So this mixture will be called as series mixture. Okay, so series mixture. So यहाँ पे आपका series mixture. Now we have to take the sampler. So before going into the sampler, you can see the basic amplifier. यहाँ पे basic amplifier का gain क्या होगा? AV and that will be V0 by Vi. V0 कहाँ पे है? V0 is here. Okay. So आपको voltage sampling करना है. So if I want to do the voltage sampling, so we have to take it in a shunt connection sampler में. तो sampler में क्या होता है? shunt connection for taking the voltage information. तो यहाँ से आपका voltage information जा रहा है like this. ओके और यहाँ पे आपका लोड कनेक्शन RL. नाउ यू कैन सी दिस V0 एंड दिस V0 ये दोनों सेम होगा. द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस RL विल बी I0 and that is the current flowing here I0. Okay, now what is the voltage here? So the voltage here is V0. Okay, because same information is connecting. Now what type of shunt we have connected right now? We have connected voltage sampling यहाँ पे. So this is voltage sampling. So series mixing, voltage sampling. That's why the name is voltage series topology. Voltage series topology. Okay. So this type of जो वाले circuit पे, if the amplifier consists of voltage series topology, always remember that the amplifier will be voltage amplifier. The amplifier will be voltage amplifier because the output voltage is, you are doing the voltage sampling, so the output parameter is the voltage. We are doing the series mixing, so voltage is mixing at the input, so input is also voltage, output is also voltage. That's why it must be a voltage amplifier. Okay, so next point मैं लिख सकता हूँ, since we are doing the voltage sampling, that's why we can say that the output is voltage, and since we are doing the series mixing, that's why the input will be series mixing मतलब voltage mixing. So if voltage is mixing, so we can say that the input parameter is also voltage. Okay, so if it is the, so that's why the voltage series topology connected amplifier must be a voltage amplifier. So always जहाँ पे आपका voltage series topology होगा वो हमेशा आपका voltage amplifier होंगे. That is a very important thing. So all the voltage amplifiers are connected in voltage series topology. Voltage series topology हमेशा होगा. Okay, so now if I similarly right now find, let us see the what we can say, that the input and output impedance. So if I see the impedance at this point,
So it will be the input impedance of the basic amplifier Ri. So Ri will be equals to Vi divided by Ii. Similarly, if I see the input impedance at this point, so it will be RIF. So RIF is equals to Vs divided by II. Okay. So what you can see, this RIF will be equals to, if you derive, you can see that it will be this input impedance into D. D क्या होगा? Desensitivity. We have already discussed that in the previous class. So feedback के बाद जो आपका input impedance होंगे वो आपका increase हो जाएगा. But here the output impedance of the basic amplifier was R0, and if we find the output impedance at this point, so it is R0F. So for voltage series feedback, ROF, that is the output impedance with feedback, will always be R0 divided by D. That means it will be decreased. That is the very important thing. See, the output impedance with feedback is decreasing, the input impedance with feedback is increasing for voltage series topology. ये आपको याद रखना ही है. That's why in the voltage amplifier, आपको मैंने बोला था, in the previous classes we have discussed voltage amplifier, current amplifier and trans resistance amplifier, trans conductance amplifier, all these things we have discussed. So voltage amplifier वाले केस में आपका जो input impedance था, if you remember, that was very low. Input impedance was high, but the output impedance of the voltage amplifier was low. Why it was low? Because in the voltage amplifier we use this topology, and using this topology we can see that the output impedance after using the feedback connection is decreasing by the D factor, and the input impedance is increasing by the D factor. So that's why voltage amplifier will always have input impedance high, because RIF will be equals to Ri into D. So RIF is increasing than D, and R0F is decreasing with respect to R0 by the D factor. So this is the reason why the voltage amplifier will have the input high input impedance and low output impedance. Clear? यहाँ तक क्लियर है? Is it clear, Saurabh? यहाँ तक क्लियर है आपको? Please let me know. Then I will go for the next topology. So all these four topologies are very, very important. You have to understand all this topology. Now let us go for the next topology. So the next topology we are going for the voltage shunt topology. So as we have said earlier that this voltage denotes the sampling, and this shunt denotes the mixing. So in this case what happens? What type of connection is there? There is a shunt mixing and voltage sampling. Shunt mixing and voltage sampling. So we can say here the first point is that I am writing the point here.
the first point is that we have voltage sampling प्लस आपके पास है शंट मिक्सिंग. ओके, शंट मिक्सिंग में क्या होता है? इफ यू रिमेंबर, इफ यू गो फॉर द शंट मिक्सिंग पार्ट, तो you can see that in shunt mixing we mix the current. So that means in this case what we can write कि shunt mixing का मतलब होता है current mixing. That's why it will also be called as voltage current feedback. So it is also called as voltage current feedback topology, voltage current topology. Now voltage sampling, if you go for voltage sampling, if you remember the voltage sampling, so for voltage sampling we can see we have to use the shunt connection. So voltage sampling means the shunt connection, shunt sampling. So that's why we can call this topology as shunt topology, shunt topology, shunt topology. But in this case, this shunt word is denoting the mixture part, this shunt denoting the sampler part, this voltage is denoting the sampler part, this current denoting the mixture part, this voltage denotes the sampler part, and this shunt denotes the mixture part. ये आपका मिक्सर पार्ट डिनोट कर रहा है. जस्ट ये वाले टोपोलॉजी के वाले केस में अगर आपका नाम ऐसे होता है तो पहले मिक्सर फिर शंट, बाकी सारे जगह पे शंट, उसके बाद मिक्सर. ओके, नाउ लेट अस ड्रॉ द सर्किट. सो फॉर ड्रॉइंग द सर्किट आई एम जस्ट कॉपिंग दिस पार्ट. ये वाले पार्ट को मैं कॉपी कर रहा हूँ. If I copy this part, I will connect this. Okay, अब देखिए. So how to connect this? You know how to connect this? First of all, let us put here. Let us go for the mixing part. So mixing में क्या है? Mixing is current mixing. So if it is current mixing, then we have to connect it in a shunt connection. That's why shunt topology. Okay, shunt mixing है आपके पास. So shunt अगर mixing है, so this will be the line. Okay, और shunt mixing है, so that means a line will come here. There will be a shunt connection. So there will be a shunt connection. This one will be connected here and this one will be connected here. Okay, now यहाँ पे shunt mixing वाले टाइम पे the इनपुट जो सोर्स होता है वो क्या था? इनपुट सोर्स वाज द IS. इफ यू रिमेंबर, द इनपुट सोर्स वाज IS. एक करंट सोर्स था. सो दिस वाज द करंट सोर्स. ओके, ये IS आपका जाएगा. दिस वन इज IS. नाउ दिस IS
will be divided into two parts. One part will be the IF and second part will be the II. Okay, so what will be the input voltage here? So input voltage अगर मैं यहाँ पे assume करता हूँ, so let us say the input voltage here is VI. Okay, VI is the input voltage here. So this is the shunt mixing, you can see. So this IF current comes here. So this is the IF current and this is the IF current that is going back. So this is the IF current that is going back. Okay, so see shunt mixing में क्या होता है, आपका current mixing होता है. So current is mixing here, you can see. So this part is called, will be called as the shunt mixing or the current mixing. So this is shunt mixing. Shunt mixing. Okay, so if it is the shunt mixing, then यहाँ पे आपका इनपुट क्या आ रहा है, इनपुट आपका करंट आ रहा है. नाउ आपका अगर वोल्टेज सैम्पलिंग करना है, वोल्टेज सैम्पलिंग, सो लेट अस डू द वोल्टेज सैम्पलिंग. सो यहाँ पे भी आपका शंट कनेक्शन होंगे. ओके, सो यहाँ पे भी आपका शंट कनेक्शन होगा. सो यहाँ से आपका शंट कनेक्शन, लेट अस ड्रॉ दैट. शंट कनेक्शन यहाँ से. So this will be the shunt connection. Okay, we know that in the voltage sampling we have to do the shunt connection, or here from here only load resistance will be connected. A load resistance will be connected, that is RL. Okay, now you can see the voltage, output voltage of the basic amplifier is V0. So that output voltage will be here only, same thing, and the current, let us say, that is I0. Okay, and this part will be called as the voltage sampling. This part will be called as the voltage sampling. This part you can see. So if it is the voltage sampling, then so यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि voltage sampling. So this will be the voltage sampling. What will be the output voltage here? यहाँ पे आपका जो आउटपुट वोल्टेज होंगे वही आपका यहाँ पे इनपुट वोल्टेज होगा. सो V0 और यहाँ पे IF, यहाँ पे आप आ रहा है II और यहाँ पे आपका आउटपुट वोल्टेज है V0. दैट मीन्स ये जो बेसिक एम्पलीफायर है, इस बेसिक एम्पलीफायर का गेन क्या होंगे, आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट करंट. और यहाँ पे क्या होगा गेन, यहाँ पे गेन होंगे आपका output current, that is IF, divided by V0. So what is this gain called? This gain is nothing but trans resistance gain. We have defined that already, Rm, and this beta is IF by V0. That's why this amplifier must be a trans resistance amplifier. होपफुली आपको याद है, इसको हम लोग ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर बोले थे. ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर जिसका इनपुट आपका करंट है और आउटपुट पे आप वोल्टेज मिल रहा है. सो दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ कनेक्शन इज कॉल्ड एम्पलीफायर इज कॉल्ड एज द
trans resistance amplifier. So this is a trans resistance amplifier, as you can see. Okay, so now similar way में we can see that there are another let us denote some important point. Another important point is that if we want to find the input impedance at this point, so it will be the input impedance Ri, and if we want to find the input impedance at this point, so this will be the input impedance of the total overall feedback amplifier. Similarly, if the output impedance is found at this point, it will be the output impedance of the basic amplifier, and if we find the output impedance at this point, so this is R0F, and surprisingly this R0F value will be the R0 value divided by the desensitivity factor, and this RIF value will be input impedance Ri divided by desensitivity factor. So what we can see, if we use the voltage shunt topology, the input impedance of the total feedback amplifier will be decreased, as well as the output impedance of the total feedback amplifier will also be decreased. Okay, so that's why for trans resistance amplifier, if you remember, for trans resistance amplifier, if you remember trans resistance amplifier, trans resistance amplifier वाले केस में we have already denoted that the input impedance and the output impedance of the trans resistance amplifier क्या था? Input impedance आपका बहुत ही लो था and output impedance भी आपका बहुत लो था. क्यों लो था? Because in trans resistance amplifier we have to use the voltage shunt topology, and for using the voltage shunt topology, the input impedance will be decreased by desensitivity factor D, and the output impedance will also be decreased by desensitivity factor D. That's why the input impedance will be low and the output impedance will also be low. This is the reason why the voltage shunt topology has been used. So in this way we can find the different topologies. So I am taking 5 minutes break, then we'll start the session. I am taking 5 minutes break, then we'll start the session. So इसके बाद हम लोग जाएंगे वोल्टेज शंट हुआ आपके पास, हमने वोल्टेज सीरीज के बारे में डिस्कस किया था यहाँ पे. देन विल गो फॉर द करेंट शंट एंड करेंट सीरीज. ओके, देन वहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वालेंगे उसके बाद कि आपके पास एक प्रैक्टिकल सर्किट होगा और प्रैक्टिकल सर्किट से कैसे हम लोग ये टोपोलॉजीज को ढूंढ पाएंगे. How to find the topologies. So for that you have to wait for some minute. We'll take 5 minutes break, then we'll start the session. Okay, आप लोग जाइएगा मत, अब 5 मिनट ब्रेक लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं.
হ্যাঁ
now let's start the another topology. So current shunt topology. Okay, so current series topology. So we have already discussed the two topologies. Now we will discuss about the current series topology. So in the current series topology, what will happen? As we have mentioned earlier, that this current, so this current name is due to, it is signifying the sampling. Okay, and this series name is defining the mixture. So that means what we are having? We are having the current sampling. We are having current sampling plus the series mixing. Okay, so it can also be called as current. अब मिक्सिंग का मतलब क्या होता है? सीरीज मिक्सिंग का मतलब क्या होता है? सीरीज मिक्सिंग का मतलब होता है वी आर मिक्सिंग द वोल्टेज. So that's why sometimes it is also called as the current voltage topology. करंट वोल्टेज टोपोलॉजी भी कहला जाता है ये. अनदर वे, ये जो शंट है, ये जो सैम्पलिंग है, जो करंट सैम्पलिंग होता है, करंट सैम्पलिंग वाले केस में इफ यू रिमेंबर वी हैव टू डू द सीरीज कनेक्शन. दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज द सीरीज टोपोलॉजी. सीरीज टोपोलॉजी. तो सीरीज टोपोलॉजी वाले केस में द फर्स्ट वर्ड डिनोट्स द मिक्सचर, द सेकेंड वर्ड डिनोट्स द सैम्पलर, द करंट डिनोट्स द सैम्पलर, द वोल्टेज डिनोट्स द मिक्सचर and the current denotes the sampler and the series denote the mixture. You have to remember in this way. Okay, otherwise there will be a mistake. Now आपका जो मिक्सिंग हो रहा है, in this case you can see the mixing is series. That means you are mixing the voltage. So that means the input, since we are doing the voltage series mixing, since we are doing the series mixing, that means we are mixing the voltage. So the input parameter of the amplifier must be voltage. And in the sampling, what we are doing? We are sampling the current. So current sampling. Current sampling है, इसीलिए आपका जो आउटपुट पैरामीटर होंगे वो आपका करंट होगा. सो कोई भी एम्पलीफायर पे if the input parameter is the voltage and the output parameter is the current, so what type of amplifier we have designed? We have told that if the input parameter is the voltage and the output parameter is the current, then the name of the amplifier will be the transconductance amplifier. We have already discussed this in the previous lecture. So transconductance amplifier. Okay, now let us go for the circuit. So for the circuit, let us say I am denoting the circuit here. So in this circuit, what we have to do? We have to do the current sampling and series mixing. तो series mixing के लिए
सीरीज मिक्सिंग के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कनेक्ट द फीडबैक पाथ इन सीरीज with the input source ये वाला, and here the series connection. So I am doing the series connection here. Now input parameter is the voltage, so we have to connect a voltage here. So this will be the Vs, ये आपका Vs है, and this Vs will be connected here. So यहाँ पे आपका voltage. So this is the series mixing, or you can say the voltage mixing. So if it is the voltage mixing, then this is the mixture which is mixing the voltage. So this is the voltage mixing. So I am writing here voltage, that means this is the voltage mixing, okay. Now let us connect the output also. So output में क्या है, output पे आपका current sampling है. current sampling का मतलब क्या होता है, series sampling. तो series sampling if I want to connect, so this will be the series sampling. तो यहाँ पे आपका सीरीज सैम्पलिंग. सो दिस इज ऑल्सो सीरीज सैम्पलिंग, okay. So in the series sampling, you know, we have to connect a load here. So I am connecting a load here. So this is the load RL. This is the connection of load. So now this mixture, this sampler, so this is the sampler right now. This is the sampler, okay. So now this sampler will be called as the current sampler. So we'll call it current sampler, okay. So this will be the current sampler. Now अब देखिए यहाँ पे इनपुट पैरामीटर क्या है. सो द इनपुट पैरामीटर हमने देखा था यहाँ पे वोल्टेज है, आउटपुट पैरामीटर करंट है. सो इनपुट पैरामीटर अगर वोल्टेज है, सो लेट अस से दिस इज द इनपुट वोल्टेज, एंड आउटपुट पैरामीटर क्या है, आउटपुट पैरामीटर इज द करंट I0, okay. So this is Vs. So now if this is Vs, this is Vi, so this in output voltage of the feedback will be the Vf. So this is plus minus Vf, okay. And here the output voltage across the load resistance will be V0, and the current through the load resistance is I0, okay. So now we can denote the input resistance and the output resistance. So if we denote the input resistance and the output resistance, so what will be the input resistance, output resistance? So let us say if we measure the input resistance at this point, and if we measure the input resistance at this point,
सो बोथ ऑफ देम विल बी डिफरेंट. सो यहाँ पे होगा आपका आर आई और यहाँ पे होंगे आपका आर आई एफ. सिमिलरली if we measure the output resistance here and if we measure the output resistance here, so ये दोनों प्लेस में मेरा आउटपुट रेजिस्टेंस अलग अलग होंगे. यहाँ पे R0 और यहाँ पे होंगे R0F. Now the most interesting thing is that this R0F will be equals to R0 into D, and this RIF will be equals to, since it is voltage mixing, so it will be RI into D. So you can see the effect of feedback on the input impedance, the effect of feedback on the output impedance. Here the output impedance has been increased and the input impedance has also been increased. That's why in the transconductance amplifier, the input impedance is high and the output impedance is low. Okay, now let us see what will be the basic amplifier. So in this case you can see the basic amplifier is transconductance. So that means the gain of this amplifier will be called as, if you remember, for the transconductance amplifier we call the gain as transconductance gain, that is transconductance, that is GM, and GM will be equals to I0 divided by the input voltage. So here the बीटा क्या होंगे, यहाँ से तो आपका करंट आएगा, यहाँ से आपका करंट आएंगे. So this current will flow in this direction. So this is the I0 current and this one is the I0 current. So that means the input voltage क्या, input current यहाँ पे क्या है, I0 है for the feedback element. So output है आपका VF और यहाँ पे होगा आपका I0. So this is how the current series topology looks like. Current series topology. Okay, so this is how the current series topology looks like, where the basic amplifier will be of transconductance amplifier. Transconductance amplifier. Okay, because the input is current and the output is voltage. Input is voltage and the output is current, and we will denote the gain as transconductance. We have already done this in our previous lecture. Now we will go for the last topology. So last topology आपका होगा. So the last topology is the current shunt topology. So if we go for the current shunt topology, let us understand what is current shunt topology. So as we have mentioned earlier that this word current, the first word current is due to the sampler and the second word shunt is due to the mixture. That means इसके अंदर आपका होगा current sampling shunt mixing. So what we can write? So the first point we can write that इसके अंदर आपका है current sampling plus shunt mixing. Now as we know that this shunt mixing का मतलब क्या होता है? Shunt mixing का मतलब होता है कि current will be mixed. So current
will be mixing. So that's why the name will also be called as current topology. Current topology. The name will also be called as the current topology. Next, करंट सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है? करंट सैम्पलिंग का मतलब होता है कि वी हैव टू डू द कनेक्शन इन द सैम्पलिंग एज सीरीज कनेक्शन. So if it is a series connection, then we can call it as shunt series topology. तो shunt series topology. Shunt series topology. Okay. So now the important thing is that this shunt word is denoting the mixer. This series word is denoting the sampler. This current word is denoting the sampler. This current word is denoting the mixture. और ये तो आपका sampler है. And this one is the mixture. हर केस में आपको ये चीज ध्यान से बहुत ही बारीकी से देखना होगा. Now, in this case, what we are getting? We are getting that we are having the shunt mixing. We are getting the shunt mixing at the input. So at the shunt mixing, we know that we will mix the current. So the input parameter of the amplifier will be the current. And at the output, we are getting the current sampling. So if we have the current sampling at the output, so the output parameter will be equals to क्या होंगे? Current होगा, क्योंकि current sample कर रहा है. So input parameter is current, output parameter is current. So what type of amplifier we'll get? We'll get a current amplifier. So we'll get a current amplifier. Okay, we'll get a current amplifier. We'll get a current amplifier here, and in this case हमने पहले देखा था वोल्टेज एम्पलीफायर पहले मिला था, फिर मुझे मिला ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर, फिर ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर. नाउ वी आर गेटिंग द करंट एम्पलीफायर. सो व्हाट विल बी द कनेक्शन? सो लेट अस ड्रॉ द कनेक्शन. ओके, सो इफ आई ड्रॉ द कनेक्शन, सो राइट नाउ ये आपका बेसिक एम्पलीफायर है. ओके, और करंट एम्पलीफायर में करंट गेन होंगे. सो दैट मीन्स यहाँ पे आपको करंट गेन मिलेगा AI, और यहाँ पे आपका बीटा. So current gain, since it is the current amplifier, so the output will be the current and the input will be the current. So what you can say, that AI will be equals to I0 divided by II. Clear? Now in the input section there will be the mixture, and the mixture will be of shunt. The mixture क्या है? Mixture आपका shunt type था. Mixture क्या है? Shunt type. So let us draw the shunt type mixture. So shunt type mixture के लिए let us draw the shunt connection. If I draw the shunt connection, तो यहाँ से एक कनेक्शन आएंगे और यहाँ से एक कनेक्शन आएगा.
like this. So now यहाँ पे आपका एग्जाम्पल. So the connection is here. The connection is here. Now at the input we have to connect. यहाँ पे कौन सा सोर्स आएंगे? यहाँ पे कौन सा सोर्स आएगा? इनपुट पैरामीटर क्या है? करंट. सो यहाँ पे करंट सोर्स. सो यहाँ पे आपका करंट सोर्स. So this is the IF, you can see. Okay, so this is the IF, you can see. ना IF नहीं, मैं इसको IS बोलूँगा क्योंकि सोर्स करंट है, तो IS. सिमिलरली आपको जाना होगा आउटपुट सर्किट में, और आउटपुट सर्किट में आपका क्या था? करंट सैम्पलिंग था. करंट सैम्पलिंग मतलब सीरीज कनेक्शन. सो फॉर दैट वी हैव टू कनेक्ट in series combination. So if we connect this in the series combination, so let us connect this in the series combination. So this is the series connection, you can see. और यहाँ पे आपका एक लोड होंगे. So I am connecting the load here. So this is the load. This is the load. Okay, so load is आपका RL. So now output पे क्या है? Current. So this current will flow in the load. So that means इसके अंदर भी आपको load current flow होंगे I0. That current will pass here and this will come here. So this is I0. And the return current will also be I0. So at the feedback element you are getting the input as current. So that means बीटा क्या होंगे? डिनोमिनेटर पे आपका करंट होगा. ओके, नाउ इनपुट पे क्या है? आपका शंट कनेक्शन है. शंट कनेक्शन मतलब यहां से भी आपका करंट आएंगे. सो दैट मीन्स यहां से आपका टोटल करंट आ रहा है IS. दैट current will be divided in two parts, IF and II. This IF will flow here and the return current will also be IF. Okay, so that means इनपुट आउटपुट पे, फीडबैक एलिमेंट के आउटपुट पे आपका IF करंट. सो IF by I0. नाउ दिस इज द मिक्सचर. सो लेट अस डिनोट द मिक्सचर. सो ये आपका मिक्सचर हुआ एंड ये मिक्सचर क्या कर रहा है? आपका करंट को मिक्स कर रहे हैं. करंट को मिक्स कर रहे हैं. सो दैट्स व्हाई द नेम इज करंट मिक्सिंग. सो करंट मिक्सिंग. ये आपका सैम्पलर है. सो लेट अस डिनोट द सैम्पलर. So that's why it is called series shunt. यहाँ पे देखिए आपका सीरीज पे कनेक्शन है, यहाँ पे सीरीज पे कनेक्शन है. So that's why यहाँ पे आपका करंट सैम्पलिंग हो रहा है. So current is sampling. So current sampling. So current sampling. Okay. Now let us denote the input and output impedance. So if we want to find the input impedance here, यहाँ पे अगर इनपुट इम्पीडेंस देखते हैं तो क्या होगा? RI. यहाँ से अगर आउटपुट इम्पीडेंस देखते हैं तो होंगे R0. एंड इफ वी वांट टू फाइंड द आउटपुट इम्पीडेंस एट दिस पॉइंट, if we find the output impedance at this point, so it will be ROF. Similarly, if we want to find the input impedance at this point, so it will be the overall input impedance. And surprisingly, this overall output impedance will be R0
into the desensitivity factor, and this RIF will be equals to the input impedance Ri divided by desensitivity factor. So the current टोपोलॉजी में इसका मतलब क्या है कि करंट शंट टोपोलॉजी में व्हाट इज हैपनिंग, करंट शंट टोपोलॉजी में आपका जो आउटपुट इंपीडेंस है वो इंक्रीज हो रहा है, आपका जो आउटपुट इंपीडेंस है वो आपका इंक्रीज हो रहा है, बट आपका जो इनपुट इंपीडेंस है वो डिक्रीज हो रहा है बाय द सेम फैक्टर डी, बाय द सेम फैक्टर डी. ओके, बाय द सेम फैक्टर डी ये डिक्रीज हो रहा है. सो दिस इज ऑल अबाउट द different topologies. So we have discussed about the current shunt topology, we have discussed about the current series topology, we have discussed about the voltage shunt topology, and we have also discussed about the voltage series topology. Okay, so all the topologies has been discussed. Right now we are going into the original circuit. So original circuit में हम लोग कैसे ये ढूंढेंगे कि क्या क्या हो रहा है. Okay, so before going into the original circuit, we will make a conclusion first. We make some conclusion, and that conclusion will be very very important. Okay, so first of all we are going to make a conclusion of different feedback topology. ये very very important है, मैं यहाँ पे start डाल रहा हूँ, ये बहुत ही important है. यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट, मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स गलती करते हैं क्योंकि याद नहीं रहता है. अब देखिए फीडबैक टोपोलॉजी, पहले जाते हैं फीडबैक टोपोलॉजी. फर्स्ट फीडबैक टोपोलॉजी इज वोल्टेज सीरीज टोपोलॉजी. फर्स्ट वी आर गोइंग फॉर वोल्टेज सीरीज टोपोलॉजी. सो वोल्टेज सीरीज टोपोलॉजी वाले केस में आपका जो एम्पलीफायर हुआ था वो एम्पलीफायर वाज द वोल्टेज एम्पलीफायर, that was voltage amplifier. In that voltage amplifier, the overall input impedance after the feedback was RIF, and RIF was equals to RI into D, and the output impedance after feedback ROF is equals to R0 divided by D. What is D? D was the desensitivity factor, that is 1 plus A beta, and here since we are using the voltage amplifier, so it will be voltage gain AV into beta. What is AV? AV is the voltage gain of the basic amplifier, beta is the gain of the feedback path. Another important thing, this voltage denotes the sampler, this series denotes the mixture. Now let's move for the next topology, that is the voltage shunt topology. वोल्टेज शंट टोपोलॉजी में जो एम्पलीफायर यूज हुआ था, इक्विवेलेंट एम्पलीफायर क्या था? ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर, ट्रांस रेजिस्टेंस amplifier, and here it was RIF. RIF क्या था? RIF was RI divided by D, and what was R0F? R0F was R0 divided by D. What was D? D था 1 plus A beta, and A is nothing but the gain of the basic amplifier, and since we are using the trans resistance amplifier, the gain of the trans resistance amplifier is trans resistance, that is Rm into beta. Another thing, this voltage denotes the sampler and this shunt denotes the mixer. Okay, now we will go for the next topology, that is the current series topology. So current series topology.
सो करेंट सीरीज टोपोलॉजी में आपका जो करंट था वो आपको सैम्पलर के लिए हो रहा था, आपका जो सीरीज है वो आपका मिक्सचर के लिए हो रहा था, एंड जो एम्पलीफायर आपको इक्विवेलेंट आ रहे थे दैट वाज ट्रांसकंडक्टेंस एम्पलीफायर, ट्रांसकंडक्टेंस amplifier. In this case, the overall input impedance with feedback RIF was input impedance into D, and the output impedance overall with feedback was R0 into D, and D क्या था? D was equals to 1 plus gain of the basic amplifier, that is basic amplifier is transconductance, उसका gain क्या था? GM into beta. Now let's go for the last one, that is the current shunt. Current shunt. current shunt वाले केस में क्या हो रहा है? current shunt वाले केस में आपका जो करंट है, ये करंट इज डिनोटिंग द सैम्पलर एंड द शंट इज डिनोटिंग द मिक्सर. सो दैट्स वाई यहाँ पे जो इक्विवेलेंट एम्पलीफायर था वो था आपका करंट एम्पलीफायर, करंट एम्पलीफायर था. एंड इन दिस केस द इनपुट इम्पीडेंस after feedback, that is the overall input impedance of the feedback amplifier, was the basic amplifier input impedance divided by the desensitivity factor, and the overall output impedance was the input impedance Ri divided by the D. And what was D? D was 1 plus gain of the current amplifier is AI into बीटा. ये जो चार्ट है, ये चार्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है. यू हैव टू रिमेंबर दिस एवरी डिटेल्स ऑफ द चार्ट, अदरवाइज आपका बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकता है. ओके, कोई डाउट किसी को? एनी डाउट एनीवन? Now let's go for होमवर्क. यहाँ पे एक होमवर्क है, सो ये होमवर्क आपको करना है. दिस इज द होमवर्क. ओके, एम्पलीफायर विदाउट फीडबैक गिवन है. इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस, द इनपुट इम्पीडेंस ऑफ द करंट गेन, करंट नेगेटिव फीडबैक using the above amplifier with feedback factor. Okay, so this is all about the feedback amplifier. Okay, and we will discuss in the next session, we will discuss about the circuit, how to find the feedback topologies in the case of different circuits. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वो क्वेश्चंस पे आते हैं, आपको सर्किट्स देंगे और वो सर्किट से आपको पता होना चाहिए, निकालना होगा कि व्हाट आर द टोपोलॉजीज ऑफ फीडबैक हैज़ बीन यूज्ड इन द सर्किट. सो वी आर एंडिंग द सेशन हियर, वी आर एंडिंग द सेशंस हियर, and we'll discuss the session next part in the next session. Thank you everyone.